ओम अस्य श्री पंचमुख हनुमत्मन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः पंचमुख विराट हनुमान् देवता क्रीं बीजं श्रीं शक्तिः क्रौं कीलकं क्रूं कवचं क्रैं अस्त्राय फट् इति दिग्बन्धः। श्रीगरुड उवाच अदध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरी यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियम्। पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकाम्यार्थसिद्धिदम्। पूर्वान्तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दंष्ट्राकराळवदनं भ्रुकुटीकुटिलेक्षणम्। हसैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनम्। पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम्। उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेताल ज्वररोगादिकृन्तनम्। ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तं करं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरम्। जघान शरणं तत्स्या सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखरुद्रं हनुमन्तं दयानिधिम्। खड्गं त्रिशूलं खड्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्टिं कौमदिकीं वक्षं धारयन्तं कमण्डलुम्। भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्पुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम्। प्रेतासनो विपिष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम्। सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्णं वक्त्रं शशाङ्कशिखिरं कपिराजवर्यं। पीताम्बरादिमुकुटैरुपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाज्यमिनिशं मनसा स्मरामि। मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुं संहार मां रक्ष श्रीमन्नापादमुद्धर। ॐ हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता। ॐ हरिमर्कटाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय पूर्वकपिमुखाय सकलशत्रुसंहारकाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय दक्षिणमुखाय कराळवदनाय नरसिंहाय सकलभूतप्रमथनादाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय पश्चिममुखाय गरुडाननाय सकलविषहराय स्वाहा।
ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय उत्तरमुखाय आदिवराहाय सकलसम्पत्कराय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकलजनवशङ्कराय स्वाहा। ॐ अस्य श्री पञ्चमुख हनुमन्मन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः पञ्चमुख वीर हनुमान् देवता हनुमान् इति बीजं वायुपुत्र इति शक्तिः अञ्जनीसुत इति कीलकं श्रीरामदूत हनुमत्प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः इति ऋष्यादिकं विन्यसेत्। ॐ अञ्जनीसुताय अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्यां नमः। ॐ वायुपुत्राय मध्यमाभ्यां नमः। ॐ अग्निगर्भाय अनामिकाभ्यां नमः। ॐ रामदूताय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ पञ्चमुख हनुमते करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः इति करन्यासः। ॐ अञ्जनीसुताय हृदयाय नमः। ॐ रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा। ॐ वायुपुत्राय शिखायै वषट्। ॐ अग्निगर्भाय कवचाय हुम्। ॐ रामदूताय नेत्रत्रयाय औषट्। ॐ पञ्चमुख हनुमते अस्त्राय फट्। पञ्चमुख हनुमते स्वाहा इति दिग्बन्धः। अधध्यानम् वन्दे वानरनारसिंह खगराट्क्रोडाश्ववक्त्रान्वितं दिव्यालङ्करणं त्रिपञ्चनयनं देदीप्यमानं रुचा। हस्तैर्जैरसिखेटपुस्तकसुधां कुम्भां कुशाद्रिं हलं खड्वाङ्गं पणिभूरुहं दशभुजं सर्वारिवीरापहम्। अथ मन्त्रः। ॐ श्रीरामदूताय आञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलपराक्रमाय सीतादुःखनिवारणाय लङ्कादहनकारणाय महाबलप्रचण्डाय पल्गुनसखाय कोलाहल सकल ब्रह्माण्ड विश्वरूपाय सप्तसमुद्र निर्लङ्घनाय पिङ्गलनयनाय मितविक्रमाय सूर्यबिम्बफलसेवनाय दुष्टनिवारणाय दृष्टिनिरालङ्कृताय सञ्जीविनी सञ्जीविताङ्गद लक्ष्मण महाकपिसैन्यप्राणदाय दशकण्ठ विध्वंसनाय रामेष्टाय महाफाल्गुनसखाय सीतासहित रामवरप्रदाय षट्प्रयोगाम पञ्चमुखवीर हनुमन्मन्त्रजपे विनियोगः। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय बं 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 औषट् स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय
पं 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 पट् स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय खें 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 मारणाय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय लुं 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 आकर्षित सकल संपत्कराय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय धं 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 शत्रुस्तम्भनाय स्वाहा। ॐ टं 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 कूर्ममूर्तये पंचमुखवीर हनुमते परयंत्र परतंत्रोच्चाटनाय स्वाहा। ॐ खं खं गं घं जं चं छं जं झं ञं ठं ठं डं ढं नं तं धं दं धं नं पं पं बं भं मं यं रं लं वं शं शं सं हं लं क्षं स्वाहा इति दिग्बन्धः। ॐ पूर्वकपिमुखाय पंचमुख हनुमते टं 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 सकल शत्रु संहारणाय स्वाहा। ॐ दक्षिणमुखाय पंचमुख हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः सकलभूतप्रेतदमनाय स्वाहा। ॐ पश्चिममुखाय गरुडाननाय पंचमुख हनुमते मं 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 सकल विषहराय स्वाहा। ॐ उत्तरमुखाय आदिवराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकण्ठमूर्तये पंचमुख हनुमते स्वाहा। ॐ ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय रुं 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 रुद्रमूर्तये सकल प्रयोजन निर्वाहकाय स्वाहा। ॐ मञ्जनीसुताय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय श्रीरामचन्द्र कृपापादुकाय महावीर्यप्रमथनाय ब्रह्माण्डनाथाय कामदाय पंचमुखवीर हनुमते स्वाहा। भूतप्रेत पिशाच ब्रह्मराक्षस शाकिनी ढाकिन्यन्त ऋक्षग्रह परयंत्र परतंत्रोच्छदनाय स्वाहा। सकल प्रयोजन निर्वाहकाय पंचमुखवीर हनुमते श्रीरामचन्द्र वरप्रसादाय जं 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 स्वाहा। इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेत् नरः एकवारं जपे स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तु पठेत् नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठेत् नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभं चतुर्वारं पठेत् नित्यं सर्वरोगनिवारणं
పంచవారం పఠేన్నిత్యం సర్వలోకవశంకరం షడ్వారం చ పఠేన్నిత్యం సర్వదేవశంకరం సప్తవారం పఠేన్నిత్యం సర్వసౌభాగ్యదాయకం అష్టవారం పఠేన్నిత్యమిష్టకామ్యార్థసిద్ధిదం నవవారం పఠేన్నిత్యం రాజభోగమవాప్నుయాత్ దశవారం పఠేన్నిత్యం త్రైలోక్య జ్ఞానదర్శనం రుద్రావృత్తిం పఠేన్నిత్యం సర్వసిద్ధిర్భవేద్ధృవం నిర్భలో రోగయుక్తశ్చ మహావ్యాధ్యాదిపీడితః కవచస్మరణేనైవ మహాబలమవాప్నుయాత్ इति सुदर्शन संहितायां श्रीरामचन्द्र सीता प्रोक्तं श्रीपञ्चमुख हनुमत्कवचं सम्पूर्णम्